بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. This is your English class. Let's start the class with A to Z poem. Stand up for poem. Okay, let's start. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Very good. It was a nice poem. Did you enjoy? Okay, students. Do you remember what is this? Yes, bee. Its name bee. बच्चों ये bee है हमारा नया दोस्त. Bee. What's the name of it? Bee. Okay बच्चों, अब हम इसका साउंड पढ़ेंगे. बी साउंड ब. बी साउंड ब. बी का क्या साउंड है बच्चों? बी साउंड ब. बी साउंड ब. Okay students, after repeating the name B and sound B, we will move toward the action. B, name B, sound 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 B. Okay students, after revising the previous lecture, we will move toward the next, which is formation. But before formation, we will revise the beginning sound of these pictures. Name B, sound B. B, boy. B, baby. B, ball. B, bat. B, box. B, bus. B, butterfly. B, bird. B, bag. B, book. Now stand up for formation. Make straight your right arm like this. Raise your two fingers. Just move the wrist. But be careful, try to not move the elbow. Now be ready and follow me. First we will do the practice in the air. Top to bottom, up all the way round. 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 You have done it. Now move toward the table. Clear the table and start tracing over the table. But this time just one finger. Top to bottom, up all the way round. 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 बहुत अच्छे. एयर और टेबल एक्टिविटी के बाद हम एक और एक्टिविटी करेंगे which is also very interesting. Take the sand in a disposable plate and start the practice with your right hand, one finger. Top to bottom, up all the way round.
top to bottom, up all the way round. Yes. Now it's the time for another activity. Take the Play-Doh. Mix it and roll it like a snake. Roll it like a snake. And try to form B. Yes, top to bottom, up all the way round. Yes, to bottom, up, all the way round. Very good, Shial. Very good. top to bottom, Up all the way round. top to bottom, Up all the way round. Okay students, now we have one more activity. बच्चों, आपको बी का नेम और साउंड याद हो चुका है. अब आपने उन थिंग्स के सामने बी लिखना है जिनका बिगनिंग साउंड ब है. ओके, लेट्स स्टार्ट शियाल. यस, स्टार्ट. साथ साथ पढ़ें. top to bottom, up all the way, box. bubbles, Box. up all the bubbles, back, Top to bottom. up all the way around. Very okay students, now open your book, page number 11. Here is the same activity for you. Write B. Write B. बच्चों, आपको B लिखना है उन थिंग्स के आगे जिनका बिगनिंग साउंड ब है. ओके बच्चों, ये क्या है? बी. और ये डॉट से लिखा हुआ बी है. बच्चों, जल्दी से पेंसिल उठाएं और इसको ट्रेस करें. और नीचे वाली लाइन में आप खुद बी लिखोगे, बट इन अपर 3 लाइन्स. ऊपर की 3 लाइन्स में ये आपका क्लास वर्क है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर नोटबुक. बच्चों, ये आपकी नोटबुक है. ये वाली मार्जिन लाइन पहले से ड्रॉ है और आपको यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है. यहाँ पर आपने होमवर्क लिखना है. यहाँ पर हम डे लिखेंगे और यहाँ डेट. लेटर बी. आप लिखेंगे लेटर बी. We have 4 lines. We will write B in upper 3 lines. Color it. You will draw a ball and you will color it. बच्चों, ये आपका होमवर्क है. यहाँ पर आपने B लिखना है और यहाँ पर भी आपने B लिखना है. ओके. Okay students, we have learned the name, sound, action, formation and story of letter B. उम्मीद है आपने B की फॉर्मेशन अच्छी तरह से सीख ली है. घर में बार बार प्रैक्टिस करें और अपना होमवर्क कंप्लीट करके एक अच्छी सी वीडियो बनवाएं और हमसे व्हाट्सएप पे शेयर करें. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.